पंजाब हुकूमत का एक और डिवीजन बनाने का फैसला है। वज़ीर आला पंजाब सूबाई काबीना इजलास में मंजूरी देंगे। इजलास में मियां वाली को डिवीजन बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताएगा, एक तरफ सियासी हलचल का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब डिवीजन जो है उनके बारे में एग्रीमेंट शुरू हो चुके हैं। हसन से भी रब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का एक और डिवीजन बनाने का फैसला है। वज़ीर आला पंजाब सूबाई काबीना इजलास में मंजूरी देंगे। इजलास में मियां वाली को डिवीजन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपको बता रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सूबाई काबीना इजलास में मंजूरी देंगे और इजलास में मियां वाली को डिवीजन की मंजूरी दी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन रजा। हसन बताएगा, एक तरफ सियासी हलचल है जो अरूज पर है और दूसरी जानिब डिवीजन्स की मंजूरी दी जा रही है। हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे तफसीलन आगाह कीजिएगा। हसन से भी रब्ता करेंगे, आपको बता रहे हैं डिवीजन बनाने का फैसला है और इसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब सूबाई काबीना इजलास में मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन पहुँच गए हैं। पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिन इंतखाबात बारे मुशावरत जारी है, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है, गवर्नर की जानिब से भी दस्तखत होने बाकी हैं, जबकि इससे पहले ही मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद ही हतमी फैसला आएगा कि अगला प्रोसेस क्या होगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और राना सनाउल्लाह मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुँच गए हैं। पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिन इंतखाबात बारे मुशावरत की जाएगी, अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, वफाकी वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें शेड्यूल हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। जबकि आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन पहुँच गए हैं मुलाकात के लिए। पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिन इंतखाबात बारे मुशावरत जारी है, अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिन इंतखाबात बारे मुशावरत की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताएगा, मुशावरत का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? जी, वज़ीर शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और सेनेटर्स ने सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ और मामले खसूसी वज़ीर आज़म के अताल तारड़ और इनके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान उनकी रियासत का उन्होंने किए। ऐसे मुलाकात में शहबाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिन इंतखाबात के बारे में मुशावरत की गई। जी ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बरह रास्त से चलते हैं आपको गाजी चौक, जहाँ रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खास तौर पे मैं ख़वातीन का जिक्र करूंगा क्योंकि हमारी ख़वातीन रुबीना शाहीन यहाँ पे मौजूद है, रुखसाना नवीद मौजूद है। इन्होंने भी जो मेहनत की है और जिस तरीके से मेंबर साजी की है, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस जोशो खरोश से अवाम हमारे साथ आ रही है, जो पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, इसमें तहरीक इंसाफ की क्लीन स्वीप होगी और कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। ये जो शहबाज शरीफ के छक्के छूटे हुए हैं, ये जो राना सनाउल्लाह को अब बात करनी जो है वो मुश्किल पड़ रही है, ये जो बाकी इनके अंदर नून लीग के अंदर दरारें पड़ रही हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो इस सतह पे पहुंच चुकी है कि अब इनको लाले पड़े हुए हैं और इसलिए इनकी ये हमेशा कोशिश रही है, पिछले 8 महीने से इनकी कोशिश है कि इलेक्शन ना होने दिया जाए।
किसी ना किसी तरीके से कोई बहाना बनाया जाए, इलेक्शन ना हो, क्योंकि इनको मालूम है जिस तरह 17 जुलाई को अवाम में इमरान खान गए थे और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली 17 जुलाई को, इनको ये मालूम है कि अगर ये नेशनल इलेक्शन आप कराते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ की आएगी। इसलिए ये परेशान है, ये घबराए हुए हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन आइन जो कहता है उस पर अमल दरामद होगा। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह पंजाब में इलेक्शन होगा, उसमें कामयाब होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा। और नाज़रीन, अल हमरा हॉल 2 में थिंक फेस्ट का छठा सेशन जारी है, आपको दिखाते हैं। It was like everything an Islamic State would not stand for. The Islamic State, the Taliban, defined as an Islamic State. And on the other hand, Kabul, the rumors in Kabul about Kandahar and about Mullah Omar, and many people in Kabul still today don't believe Mullah Omar existed, for example, or they had the weirdest ideas that he was almost like an animal, or that he was missing 2 legs, and so yeah. But yeah, for Mullah Omar, if you really try to be in his mind, the idea of the role of a female is keep her inside, protect her. That's how Mullah Omar would say it. I protect her by putting on a burqa and let her not go out, let her take care of my family. It would be a shame if she would be in a schoolroom. I mean, it would be impossible for Mullah Omar to imagine that. His Sufi teacher, for example, Abdurrahman, he was driving his wife around and he asked her to lay on the back seat of the car. So she was in a burqa, but she also had to like lay on the back seat of the car so that nobody would see her. And that was seen in the crowd of Mullah Omar as very good, as very protective, as somebody who was taking care of the female. And so, yeah, that is, it was a very strong idea. It was also, just another argument for Mullah Omar was to keep the women inside, is that he depended a lot on these young fighters that his movement was mainly young madrasa guys, mainly pushed out through the jihad, being in the madrasas in Quetta, for example, who also didn't know Kabul, who were now, small mayors or governors, and he did not want to let them down. He thought that they also didn't want to see a female go into a shop without companion of a male, for example. So he needed his army. Massoud was still resisting at that time. So he needed to keep his army going, and for that he also stayed strict because of the morale. That's how he was thinking. But Bete, this is actually interesting because while you've mentioned about the city and this rumor going about prostitution in big cities, post-Taliban, I'll get you back in the current times. Post-Taliban takeover, I was one of the few journalists to be in Kabul when the takeover happened. Mm-hmm. And the very next day, we had Logari Talibs guarding the Serena, who were former suicide bombers or current suicide bombers. So not sure if we would feel protected or not. But we had a conversation, and by we, I mean we had a couple of BBC journalists, and I was there, and then NBC and other journalists as well. So this guy was a failed suicide bomber. He tried to blow himself up twice, and he could not. Now he was guarding us. पंजाब में 65 अस्पतालों में सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अस्पतालों की जानिब से ज़ायदुल-मयाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। मरीजों की सर्जरीज में ज़ायदुल-मयाद अद्वियात का इस्तेमाल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, अस्पतालों की जानिब से ज़ायदुल-मयाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में 65 अस्पतालों में सहूलत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन। सज्जाद, बताएगा, सहूलत ख़त्म कर दी गई है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, ज़ायदुल मियाद अद्वियात के इस्तेमाल के बायस पंजाब में 65 हॉस्पिटलों के सेहत सहूलत कार्ड की जो सहूलत थी इसको ख़त्म कर दिया गया है। ऑर्डर्ड पैरा में हेल्थ कार्ड के
पैनल पर मौजूद हस्पतालों की जानब से ज़ायदुल मियाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। इस तरह दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक जो हस्पतालों ने सेहत कार्ड पर मरीजों की सर्जरी में ज़ायदुल मियाद अद्वियात इस्तेमाल की, बाज़ हस्पतालों की जानब से मरीजों को गैर मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इस तरह से सेहत सहूलत कार्ड के लिए काम करने वाली पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की संगीन गफलत सामने आई है और ज़ायदुल मियाद अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अस्पतालों को 88 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद की अदायगी भी की जा चुकी है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की कमजोर मॉनिटरिंग से मरीजों को गैर मेयारी सर्विसेज जो हैं वो फराहम की गई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अस्पतालों को 88 करोड़ 35 लाख रुपए की अदायगियों को माली बेकायदगी डिक्लेयर किया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 65 पैनल पर मौजूद अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन अस्पतालों को सेहत कार्ड के पैनल से खारिज कर दिया गया है। लेकिन सजाद, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से तो N123 हल्के का भी दौरा किया जा रहा है और मुख्तलिफ दौरे कर रही हैं और हर जगह यही आगाह कर रही हैं कि सेहत सहूलत कार्ड एक मुस्तफीद कार्ड है, इसको इस्तेमाल किया जाए। अब अचानक ये इस तरह इसकी सूरत ख़त्म कर दी जाए तो क्या मरीजों के लिए परेशानी नहीं होगी? जी, इस हवाले से लाहौर न्यूज़ को जो ऑडिट पैरा दस्तयाब हुआ है उसमें जो मीटिंग के अंदर बताया गया है ये वो तफसीलात हैं, जबकि हेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी है, हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, उसके जो सीईओ हैं डॉक्टर अली रजा, वो अभी भी इससे इनकारी हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कोई ऑडिट पैरा और ना ही किसी अस्पताल को फारग किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो है वो मीडिया से इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि जो हेल्थ सेहत कार्ड पे हॉस्पिटल थे वो ज़ायदुल मियाद जो है वो अद्वियात फराहम करते रहे हैं। जी, इनमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स के नाम जो हैं वो सर फहरिस्त हैं? जी, जो ऑडिट पैरा हमारे लाहौर न्यूज़ को वसूल हुआ है उसमें अभी तक जो है वो हॉस्पिटल की तफसीलात नहीं है। जैसे ही फॉलो अप में हम इसके ऑडिट पैरे के बाद जो है वो इसकी तफसीलात हासिल करेंगे, जबकि तफसीलात जो सारी तमाम तफसीलात हैं वो इस वक्त जो है वो हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के पास है और हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी इन अस्पतालों के नाम देने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजादा आपका अपडेट करने का। PIC के थिएटर में इस्तेमालशुदा सामान इस्तेमाल करने का मामला है। PIC इंतज़ामिया ने सर्जरी थिएटर्स बंद कर दिए हैं और मरीज़ ख़वार हो रहे हैं। ऑक्सीजनेटर्स ट्यूब न होने के बायस भी ऑपरेशन मुअत्तल किए गए हैं। सर्जरी के 10 मरीज़ों पर इस्तेमालशुदा ट्यूब्स लगाई गई हैं। इंक्वायरी कमेटी तहकीक कर रही है। इस बारे मज़ीद जान लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद बताएगा अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस सारे मामले पर? बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के थिएटर में इस्तेमालशुदा सामान इस्तेमाल करने के मामला पर PIC इंतजामिया ने सर्जरी थिएटर बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से मरीज ख्वार हो रहे हैं। PIC में दिल के संगीन मरीजों को ऑक्सीजनेटर ट्यूब धोकर इस्तेमाल की गई थी। एहसास अदारे ने छापे के दौरान इस्तेमालशुदा ऑक्सीजनेटर ट्यूब का स्टॉक जो है वो बरामद किया था। इंतजामी ज़राए का कहना है कि ऑक्सीजनेटर ट्यूब ना होने के बाद जो है वो ऑपरेशन थिएटर मुअत्तल हो चुके हैं। इससे कबल मरीजों को दोबारा वाश करके ऑक्सीजनेटर ट्यूब इस्तेमाल की गई थी। महकमा सेहत का कहना है कि सर्जरी के 10 मरीजों पर इस्तेमाल शुदा ट्यूब जो लगाई गई हैं, जिसकी इंक्वायरी कमेटी तहकीक कर रही है और चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी का कहना है कि तमाम स्टॉक को कब्जे में लेकर ड्रग टेस्टिंग मेथड से तहकीक कर रहे हैं। जी, तहकीक तो की जा रही है। सजाद ये भी बताएगा अलहमरा हॉल 2 में थिंक फेस्ट का 6वां सेशन जारी है, आपको दिखाते हैं। On that. I think that has been the red line with Pakistan as well, because that approach that Pakistan had been opting or adopting as a 5th province, instead of dealing with Afghanistan as a sovereign, independent state and giving the impression, as it has been in the US as well, that whatever we want, we being Pakistan wants to do, it will be done by the Taliban or they're an extension of the Pakistani military. I think that has really irked them, and that has taught them a lesson as well, that they don't want to be seen as a proxy of anyone, be that be Islamabad or be that be Doha or Abu Dhabi or by extension of Beijing as well. And that is the reason they would really want to themselves to be reflected as a fiercely independent group that is now in government. I think that's how they want to what they want to communicate, and I think also in some parts that they believe they are. But yeah, what was the other question? The areas where the Taliban were willing to engage with the
Oh yeah, oh yeah. I think the Taliban want to engage with many countries. They would be very happy if every country in the world would open their embassy tomorrow in Kabul. There's been always, also before 9/11, there's this very interesting feel towards, for example, the UN. They are very, they want to engage with them. The UN diplomats told me when they were driving their cars with the big logos in Kabul before 9/11, then the Taliban, local Taliban would ask them, "Are you coming? Are you opening more offices here?" But that doesn't mean intervention on I still think that if there would be more understanding, but I don't now maybe sound like a defender of the Taliban, and maybe I risk that now. But I feel that if there would be more understanding of knowing them, their backgrounds, and level of knowledge would be extremely nuanced, I think the girls' education can be solved if there is an open, humane, and also a self-reflective response of like the US, for example, and Europe, who have made tremendous mistakes in Afghanistan, but who after 9/11 do not want to be remembered of that at all. There's no reviews. The NATO reviews does some internal reviews, but look ahead. Look at Ukraine. We are already in a new war. And I think for democracies, you can do better and also reflect on what you did and the pain you did to Afghanistan. Okay, we've got 2 minutes. We've got one last question, and then we'll give a brief interview. Thank you. All right. Kudos for the discussion. It was well put forward. I just wanted your opinion on the narrative that's been going around that while Mullah Umar and his policies regarding women are not justifiable in the modern world that we live in, but it can be explained as a reaction to the confirmed more than 13,000 drone strikes, killing more than 350,000 civilians, predominantly in Afghanistan. And mind you, I'm quoting you primary source material. This is verifiable by Watson Brown, Public Policy Institute in US. So, and not to mention the fact that fetishization of Afghan women at the hands of US and its allies and Russia as well. So Mullah Umar's policies, can it be explained as a reaction to the draconian policies, as a reaction to the US and its allies? I think what we see now. परचून बाजारों में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। आवाम सस्ता आटे के लिए ट्रक पॉइंट्स पर कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। मार्केट में महंगा आटा बआसानी दस्तयाब है तो सस्ते आटे के लिए ख्वारी होने लगी है। ये रिपोर्ट देखें। मार्केट में महंगा आटा दस्तयाब, सस्ते आटे के लिए करना होगी खारी बर्दाश्त। शहर की परचून मार्केट में सस्ते आटे की किल्लत मुसलसल बरकरार है। दुकानों पर सब्सिडाइज्ड आटे के थैलों की फराहमी न हो सकी। सब्सिडाइज्ड आटे के लिए ट्रक पॉइंट पर कतारों में खड़े होना पड़ता है। मार्केट में चक्की आटा 150 रुपए, फ्लोर मिल्स का निजी गंदम का आटा 135 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से आटा 65 रुपए फी किलो फराहम किया जाता है। परचून दुकानों में आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरियों का कहना है कि सस्ता आटा मिल नहीं रहा। दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। चक्की आटा महंगा है जो खरीदने की सकत नहीं। सरकारी आटा अगर आता है तो थोड़ा सा आता है, कहीं कहीं जगह पे, हर जगह नहीं आ रहा, और जहाँ आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है। इतनी लंबी लाइन लगी होती है, 5-10 बंदों को मिलता है, कहते हैं आटा खत्म हो गया। हर बंदा परेशान है आटे की वजह से। सरकारी आटा मिलता ही नहीं है। एक गाड़ी आती है, उसमें 50 थैले होते हैं और हज़ारों से तादाद लाइन में खड़े होते हैं। सरकारी आटा तो मिल नहीं रहा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि सस्ते आटे के थैले मुख्तलिफ ट्रक पॉइंट पर वाफर दस्तयाब हैं, जहां से हर शहरी को आटा फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पोलियो मुहिम की बात करेंगे। लाहौर को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म। DC लाहौर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम का बाकायदा आगाज़ 16 जनवरी से होगा। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर।
बच्चों को मासूरी से बचाएं, इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की मियां मीर अस्पताल आमद। 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब भर में साल 2023 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज 16 जनवरी से होगा। लाहौर के 5 इलाकों से लिए गए पोलियो के नमूने मनफी आए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं 20,85,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ पूरा किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम 22 जनवरी तक जारी रहेगी। वालिदैन से अपील है ताउन किया जाए। हमारी 6,300 टीम्स जो हैं वो घर घर जाके और मुख्तलिफ जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उन पे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। और इस हवाले से इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।